So I presume that most of you people have seen the paper. Okay, so how do you like the paper? How do you like the paper? कैसा था पेपर आप लोगों के लिए? It was of moderate level difficulty, but the interesting point that has to be observed in the paper is that you see that it was a well and curious mix of technological change, conventional paper, as well as facts and figure. So starting on that note, now you see the first question, do you think that marriage as a sacrament is losing its value in modern India? This is the question. Now, if we go by the exact configuration, which will come in subsequent time, but you see that a comparative aspect has to be made in this question, that what was marriage before and what is marriage now. है कि नहीं? तो points क्या क्या होंगे? ठीक है, तो you see the point, initially the marriage was transcendental, 7 जन्मों वाला था ना, है ना पहले. अभी क्या है? Till further notice. It's complicated, and till further notice, this is the whole case. So you see that you have to have some kind of understanding of marriage, particularly the Hindu marriage and the marriage which is propagated by the universal applicability of it. Second, that what are the institutions that are arising which is decreasing the significance of the marriage. See, institution. See, initially what was the purpose of the marriage? See, emotional stability was one of the purpose. आज तो आधे emotional stability Facebook पे हो रहे होते हैं, है ना, Instagram पे, social media पे हो रहे होते हैं. तो you have to identify the various factors because of which the significance of the marriage is decreasing. And while you are writing the question, then apart from India, on one or two aspects of the Western society and Western world has to be commented upon and has to be analyzed in this question. So you see that convention or conventional knowledge and the facts and figures and the newer institutions that is emerging, okay, has to be configured in this question. Newer institutions as in what? What are the new institutions or replacement of marriage that is emerging? Live-in relationships, living apart separately, living together separately. ये सब सुना है ना आपने? Visiting husband, ठीक है? हाँ? So you see that is a bit peripheral as per the context of question. See, if there is a rise of feminism in the society, then what will happen is that, you know, there will be power balancing between husband and wife. So see, this is what I am saying. There should be symmetricity between husband and wife. Symmetric relation will exist between husband and wife. And when the moment, see, initially or in the earlier sense, the role and function of woman was within the boundaries of the home. That is, within the domesticity affair, their world rises. Now, ab domestic to nahi rahenge na. So everything will change. So, and apart from the institutions, that institutions like crèches, ठीक है, crèches भी और जो आपका adoptions हैं, ठीक है, in fact the very definition of marriage itself is changing. तो sources क्या हैं and why this question was asked? One relation is uniform civil code, because in the earlier the other Sharia laws and the other marriages, there is a conventional sense of the marriage which is still prevailing. Apart from that, if you will see, the divorce rate in various states is increasing. In Kerala, it is 300%. In Gujarat, it is 170%. Decadal growth rate in divorce. The average age of marriage is increasing. All these facts you know. You don't have to give the data. Largely, you have to comment upon some pattern.
which you already know by reading the newspaper. But for conventional part, maybe it is written in polity in very passing way. So you have to consult some book or some notes of the society. Earlier there was no question from marriage, but maybe changes in the family tradition was asked. But this year it is a bit novelty in the case of sociology, and more importantly, if you analyze the pattern of the society from past 2 or 3 years, then you will realize that the previous question, generic question of sociology paper 2 is being asked in paper 1. So it is always better to approach generic question of sociology for preparing society. Generic question. See, questions of the sociology will be written in a different way, altogether different way. But largely the syllabus of sociology is same. We read it in the everyday newspaper. तो कोई भी क्वेश्चन उसको तो अटेम्प्ट कर ही सकता है. कीवर्ड नहीं लिखना ना, जार्गनाइज नहीं करना. जार्गनाइज तो हम जीएस के पेपर को वैसे भी नहीं करते, है ना? Okay, now moving to the next question, which is why suicide among young women is increasing in India. You see, can we categorize this question as a question from empowerment? है ना? कहाँ लग रहा है empowerment ये तो suicide की बातें कर रही है. तो suicide मतलब somehow they are not completely integrated in the society, and that's why they are committing suicide. यहाँ पे you have to give some data, particularly during and after the COVID wave. The rate of suicide increased in India out of tabooed nature, but at the same time the situations were changing in a very fast and rapid way. So you see, there will always be a problem when there will be change in the social structure. We are talking about our rights, we are talking about our powers, we are talking about empowerment. But suppose if we realize empowerment and power, yet the entrenched section of the society, means the section of the society with whom power was residing, is not ready to share that power, conflict will arise. समझे? या फिर कुछ ज्यादा ऑर्गेनाइज कर दिया मैंने? ठीक है ना? See, honor killing is what? Honor killing is exertion of choices by the women. यही है honor killing. पहला पार्ट तो यहां पे आता है, that we will go for the effective individualism, means that people whom I like, I will get into relationship with. So this is breaking the. देखिए ग्लास सीलिंग अलग है, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा बस लार्जली डील करता हूं. देखिए ऑनर किलिंग क्या है? ऑनर किलिंग ये है कि अपनी चॉइसेस हमको एक्सर्ट करने हैं. देयर वी विल बी एक्सर्टिंग आवर चॉइसेस, वी विल गो बाय व्हाट आई लाइक, यू डोंट हैव टू टेल मी व्हाट आई लाइक. Okay, so but this is violating the rights of the people, particularly male or particularly patriarchs, है ना? तो वो अपने पावर को प्रिजर्व करने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे, और उसी in pursuit of that preservation by some violent activities आप किसी को मार देते हो ताकि कल की डेट में लोग ये करने से डरे, है कि नहीं? जैसे आपने देखा होगा ना पुरानी पिक्चरों में, वो कोई राजनीति में नया बंदा और पॉलिटिक्स में कोई नया बंदा आना चाहता था तो उसको लोग मार दिया करते थे. बिहार में बहुत सारे लोग मरे. एंड इनफैक्ट दिस हैज बीन अ ट्रेंड इन द मूवीज ऑफ लेट, दैट समबडी हु वांट्स टू एंटर इनटू द पॉलिटिक्स इज बीइंग किल्ड बाय द पीपल हु आर ऑलरेडी इन द पावर. ये बहुत ही कॉमन सा पार्ट है. सी व्हाट, बाय डूइंग दिस यू आर क्लोजिंग द डोर्स, है ना? तो ये वाला पार्ट है. तो एक पार्ट तो आपका ये है कि सुसाइड क्यों हो रहा है, कि एम्पावरमेंट भी हो रहा है. यही आपका इंट्रोडक्शन रहेगा. Okay, yes, we can always break the into many things that हाँ बहुत सारे पार्ट है ना. बट समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यहां पे है कि ये क्वेश्चन
is trying to see the things in an analytical way. There is no direct content in any book you name. By sources क्या है? As I tell you that there is only one and one source for the reading the society wala part. It's only newspaper. Just gather the content, conceptual knowledge from any book you like, any notes you like, and keep reading the newspaper, even the trash newspaper. That is the biggest source of the society question. Thinking is a must, but you have to read some of the trash newspaper. Times of India. Times of India is one of the trash newspaper. Huh? See, particularly the paid articles are really good, but a significant number of questions, particularly from society, which I have been observing from last 3 years, is coming from Times of India. Because that paper, see, what is the ideology of that paper? That anything public does, just publish it. That is the ideology of the newspaper. It will never support a government, it will never oppose a government. It just goes with the flow. Okay, it is one of the way to preserve the power. Just go with the flow. Don't try to change the status quo. But yes, having said that, I also must say that some of the articles in the Times of India are really good, and particularly when they comment on the society, particularly when they observe the society. Okay? तो थोड़ा सा टाइम्स ऑफ इंडिया का पर्टिकुलरली पेड आर्टिकल भी देखिएगा, या फिर कोचिंग इन हमेशा तो बैठे ही हैं इस काम को करने के लिए, क्यों करने की जरूरत है आपको? ठीक है. नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, चाइल्ड कडलिंग. वी हैव रिटन इट कि हमारे टेस्ट सीरीज से आया था. किससे? हाँ बिल्कुल, ORF इज ऑल्सो गुड न्यूज पेपर. ये देखो, ये है ना, इधर मैंने लिखा है अपने मार्केटिंग के लिए कि हाँ हमने पूछा ये सारे क्वेश्चन, ध्यान मत देना इस पे, दे भी देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. तो चाइल्ड कडलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स. अब बहुत कॉमन था क्वेश्चन, ये था, प्रेडिक्टेबल था कि आना ही आना है, AI आएगा, ये आएगा, कुछ ना कुछ आना ही आना है. ठीक है. बट यू सी दैट प्रोबेबली जब हम ज्यादा प्रेडिक्ट करने लगते हैं ना, ये क्वेश्चन आना ही आना है, तो हमारे पास लिखने का कंटेंट कम होता है. ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है उस क्वेश्चन का. तो व्हेन यू विल सी एनालाइज दिस क्वेश्चन एंड द पैटर्न particularly, and every year there will be a pattern something like that, where how technology is changing the society. Last year it was work from home, है ना, इस साल ये है. तो आपको एक जनरलाइज पैटर्न पे नहीं लिखना, आपको लिखना है कि डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, लाइक आइडेंटिटी, कॉन्शियसनेस, इन सब चीजों के साथ कैसे प्ले हो रहा है. सोशलाइजेशन ना. सी देयर इज अ वेरी फेमस थिंकर कॉल्ड पाउलो फ्रायर. मुझे पता नहीं आप लोगों को शायद नाम सुना है कि नहीं सुना है, बट ही वाज अ थिंकर ऑफ एकेडमिक, बेसिकली education. He was a thinker of education. So he says that man is an animal in the world and with the world. And with the world. क्या समझे कि man is an animal in the world and with the world. तो जो हमारी कॉन्शियसनेस सेफ होती है ना, वो विद द वर्ल्ड वाले के साथ सेफ होती है. अब आप मोबाइल पे लगे रहोगे तो कहां पे कॉन्शियसनेस सेफ होगा. ठीक है. तो आप आइडेंटिटी देख रहे हो, सोशलाइजेशन देख रहे हो, मल्टीपल चीजें देख रहे हो. पिछली बार भी वर्क फ्रॉम होम वाले क्वेश्चन में कंटेंट नहीं है आपको रेडिली लिखना, लेकिन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फैमिली सिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है. ठीक है. तो वो जो जनरलिटी कि हाँ बच्चे खेलने नहीं जाते, ये नहीं लिखना आपने, अंदर में क्या है उसको समझने की जरूरत है. ओके. You can always give the example, and it is really good that you should give the example, but you also have to identify the pattern, which is like counter cognitive development, है ना. Bro, third generation kid, third culture kid. अब कल्चरली तो आप सीखते कैसे हो? कल्चर से ही सीखते हो. आपके पास सीखने का कोई कल्चर ही नहीं रहा. अब पबजी खेल रहे हो, देख रहे हो यूएस कल्चर, चिकन डिनर, कहां सीखोगे कुछ? कि एक कल्चर किसके साथ आप आइडेंटिफाई कर रहे हो? कोई कल्चर नहीं है.
Social, that's why I told you that you have to read about the socialization also, na? Now, does urbanization lead to more segregation and marginalization of the poor in Indian metropolis? इंपॉर्टेंट क्या समझना, यहाँ पे मेट्रोपोलिस था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है समझना, शायद आप लोगों ने सुना होगा घेटोइजेशन, है ना, बहुत सारे रैप वैप भी बनते रहते हैं, गली बॉय, वो भी एक टाइप का घेटोइजेशन सोसाइटी है। रोमांटिसाइजेशन ऑफ द घेटोइजेशन सोसाइटी, गली बॉय है ना, थोड़ा सा वो वाला पार्ट, ठीक है। खैर, तो लास्ट ईयर आप क्वेश्चन देखो, कैसा क्वेश्चन था कि what is the impact of IT in the IT sector वाला ही क्वेश्चन था ना। That is the what is the impact of IT service sector revolution in second and third class cities और B and type C cities, है ना। तो अब सेग्रीगेशन की एजेंट क्या है यहां पे, ठीक है, इसमें आप माइग्रेशन भी लेके आओगे। अगेन दिस इज एन एनालिटिकल क्वेश्चन, आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे, देन दिस ट्रेंड हैज बीन प्रिवेलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड वेयर माइग्रेशन इज कंसीडर्ड एज गुड, बट देयर इज अ पॉलिटिकल ओपिनियन अगेंस्ट द माइग्रेंट्स, तो उसके बाद वो गेटोइज्ड हो जाते हैं, है ना। अब पर्टिकुलरली मेट्रोपोलिस में है ये, और क्यों है, एक थोड़ा डिस्टोपियन फ्यूचर है, ठीक है। ग्लोबल सिटी, तभी हम बोलते हैं कि मेट्रोपोलिस को ग्लोबल सिटीज बनाओ। बॉम्बे मेट्रोपोलिस है बट ग्लोबल सिटी भी है, बट बीच में ये स्लम्स जो इतने हैं, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन जो है, ये सारे उसके साइड इफेक्ट है। तो पिछले 2-2.5 साल से 2-3 साल से लगातार अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन पे तो आ ही रहा है ना क्वेश्चंस, ठीक है। निक, which one? See, both, you have to address both the part, segregation and marginalization. If you will try to segregate someone, he will automatically be marginalized. How many of you know the concept of biopolitics? हाँ, पॉलिटिकल साइंस से कितने लोग हैं यहाँ पे? पॉलिटिकल साइंस से नहीं है कोई? अच्छा, फूको बात करते हैं बायोपॉलिटिक्स की, फूको एंड डेरिडा बोथ बात करते हैं कि when you try to segregate someone based on the idea of ethnicity, based on the idea of racial grouping, based on the idea of religion, then you are developing a trend of segregation as well as marginalization, because first you will make them second class citizens and powers will be taken. Initially Jews were segregated and then they were marginalized in the society, ultimately leading to Holocaust, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19. What is caste politics? Do you think caste identity is defined by the caste politics? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार आता है किसी न किसी फॉर्म में। इसमें नया क्या है, ठीक है, फ्लूइड। ओके सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो हमने पूछा था। Why is caste identity in India both fluid and static? वर्ड प्ले है और तो कुछ नहीं है इसमें, कि इज कास्ट चेंजिंग, यही है ना क्वेश्चन। इज कास्ट चेंजिंग टू क्लास एंड क्लास चेंजिंग टू कास्ट? हाँ, see, one of the ways to say it, but this is what you have to identify. Initially, in 2019, there was a question based on the relative deprivation. Okay, last year there was a question from the tribe. So caste was not that much present in that paper. Okay, so the idea is fluidity is what? That it is changing. So हर साल ये ना किसी न किसी आइडिया में आते ही है, तो कास्ट तो फिक्स क्वेश्चन है आपका, बट वही है कि भाई कास्ट एज एन, अच्छा उससे पिछले से 2020 में आया था एसोसिएशनल ग्रुप, कास्ट एज एन एसोसिएशन ग्रुप, नहीं याद आ रहा है किसी को? शो एज द कास्ट एज एन एसोसिएशन ग्रुप, कि कास्ट हैज रिड्यूस्ड इट्स significance and it is more being used in a way to associate with each other. ठीक है, तो जैसे मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन हो गया, अजगर हो गया, इस टाइप के जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना,
Muslim Yadav, basically it is religious group. Muslim Yadav combination, my combination. Okay, Asgar hai, Ahir, Jat, Harijan and Rajput. Okay, figuratively they are opposite in each other, but साथ में आके काम कर रहे होते हैं. Okay, now discuss the impact of post-liberal economy on ethnic identity and communalism. जो जानते हो ना सब आएगा इसमें, जितनी चीजें सोसाइटी में पड़ी है पहले भी, मतलब लार्जली जो पार्ट है कि देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी क्वेश्चन, और वो आपको फिगरेटिवली हर चीज में आइडिया मिल जाएगा. तो थोड़ा सा इंटरडिसिप्लिनरी होता जा रहा है. पहले वाला भी क्वेश्चन आपने देखा पॉलिटिकल साइंस वाला ही पार्ट था, ठीक है, इकोनॉमिक्स का ही पार्ट था. तो सोसाइटी एज इन इटसेल्फ कि आप एक सोर्स से पढ़ लोगे और क्वेश्चन आंसर कर दोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ, है ना. नाउ यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, एनी एंड एवरी न्यूज़पेपर, और पर्टिकुलरली द कोचिंग मटेरियल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो थोड़ा एनालिटिकल बेस्ड है. तो हमने ये सीखा भी इस वाले साल के पेपर से कि ये सारी चीजें तो हैं. अर्बनाइजेशन एंड चैलेंजेस कॉमन थीम है, ग्लोबलाइजेशन कॉमन थीम है, कास्ट एंड डायनामिक्स, हर सिलेबस के किसी न किसी पार्ट को वो टच करते ही करते हैं. ओके, ये इनका एक इमर्जिंग ट्रेंड है, ये हर बार आ रहा है. द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फैमिली एंड चिल्ड्रन, ठीक है, एंड द राइज ऑफ गिग इकोनॉमी. ये किसी न किसी ट्रेंड में ये हर बार आ रहा है, और इस बार पहली बार इन्होंने मेंटल हेल्थ से पूछा है कोई क्वेश्चन फिगरेटिवली. तो वट एवर इज चेंजिंग इन द सोसाइटी एंड वट एवर इज टॉक्ड अबाउट इन द सोसाइटी, ओके, सो एवरीथिंग इज बीइंग आस्क्ड. ये क्वेश्चन इटसेल्फ नया था, द चेंजिंग नेचर ऑफ मैरिज, फैमिली पे पहले भी आया था. डुअल नेचर ऑफ कास्ट, फिक्स्ड क्वेश्चन है इनका. द रोल ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन एंड ट्रेडिशन in potentially suppressing the identity, individual identity. So these are the fixed part of the questions which will be asked. So my suggestion to you is read the newspaper along with gathering the conventional knowledge. किसी भी सोर्स से कर दो ना, वो जो आपका आप लोग पढ़ चुके हो, कोई भी सोर्स हो सकता है. आपने जहां से कोचिंग की होगी वहां के नोट्स होंगे, वहां के क्लास नोट्स होंगे, ठीक है, जो मार्केट में पॉपुलर है वो नोट्स होंगे. राम आहूजा कितने लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो तो कहीं से भी कर लोगे. बट यू सी अल्टीमेटली द लास्ट वर्ड एंड द फाइनल वर्ड इज रीड न्यूज़पेपर. वही है इसका एक सोल्यूशन, ठीक है. ओके, थैंक यू.